A very good evening to each and everyone. Welcome to Tisa's presentation e- e- event. Uh, and so today we have wonderful presenters with quite interesting topics. So before we begin, let us have a small round of introduction. So starting with Mr. Anil Sahu. Thank you to give me this opportunity. Myself, Anil Sahu. I am 37-year-old. Basically, I am from Gujarat and currently I am working in Reliance Industry Limited as a operation manager. I have 12-year experience in Reliance Industry in operation section and I joined Tisa in 2018. So it almost 5 year in Tisa. I like running and book reading. It's all about me. Thank you, Rohit. Thank you, Mr. Sahu, for such a wonderful introduction. Now I would like to invite Mr. Om Prakash. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ और अभी मैं गोरखपुर में रहता हूँ और वहाँ पर मैं रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्टेड हूँ और मैं टीसा। हेलो, इंटरप्शन हो रही है? हेलो हेलो हाँ प्रकाश जी, हमको आपकी आवाज आ रही है। तो मैं अभी गोरखपुर में रहता हूँ और वहाँ पर मैं एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्टेड हूँ और मैं टीसा में 2018-17 के लगभग में ज्वाइन हुआ था और बीच में मैं अचानक से इससे गायब हो गया था। प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले से इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आता हूँ और आप लोग से कुछ सीखने के प्रयास करता हूँ। थैंक यू। Thank you, Mr. Prakash. Now I would like to invite Mr. Naman Pargania. Good evening, sir. My name is Naman Pargania, and I am from Durga, Chhattisgarh, and सर तो फिर तो वही है कि सर और तो फिर मैं प्रेजेंटली फिर मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एंड वही है कि सर तो फिर तो ना मुझे है ना टीसा में ज्वाइन किए ना हुए अराउंड 5 to 6 मंथ्स हो रहे हैं और तो फिर तो हॉबीज हॉबीज है ना मैं तो फिर तो मुझे शायरी लिखने का शौक है। पोयम्स है ना लिखने का शौक है और तो फिर तो ना आज का भी तो फिर तो ना प्रेजेंटेशन तो बस है ना तो फिर मैंने अपनी है ना एंग्जाइटी को कहीं ना कहीं तो फिर तो ना दूर करने के लिए ही तो फिर मैं कर रहा हूँ। सो ना थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग मी। Thank you, Mr. Naman. Now I would like to invite Mr. KAREEM JAFFAR. Good evening, everybody. Myself, SOWCAR JAFFAR. I am from Velur, Tamil Nadu. Currently, I am doing my internship in GMC Karoor, and I have joined Tisa 2 months back. Today, I will be doing the presentation also. Thank you. Thank you, Mr. Jaffar. Now I would like to invite Abhishek. Good evening,
सब लोग को। मेरा नाम अभिषेक आनंद है और मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र भी 28 ईयर है। मैं रेलवे में काम करता हूँ एज ए लोको पायलट। मैं टीसा से लगभग 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और क्या बताऊं। Thank you, Abhishek ji. Now I would like to invite Mr. Sanjay Ojha. हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संजय ओझा है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरी हॉबीज हैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना। ओवर टू रोहित जी। थैंक यू। आई होप सभी को इंट्रोडक्शन का चांस मिल गया है। Okay, great. So we will be starting our presentations, and before beginning, I will highly encourage all the presenters to use techniques जो भी आपको TOPG में सिखाई गई है या आप जो भी टीसा के प्रैक्टिस सेशंस में सीखे हो। एंड अगर आपको टेक्निक्स आती भी नहीं हो, देन आप यहाँ पे बेझिझक हकला सकते हो। दिस इज अ सेफ प्लेस। आपको कोई जज नहीं करने वाला है। So I hope you enjoy today's presentation, and also, so coming back to some basic rules, each and every presenter will have 20 minutes, and within 20 minutes they will have to wrap up their presentations. And whenever a participant is presenting, so no one should speak in between the presenter, only the host can do so. And please understand, this is just to maintain the discipline in this in the presentations. And after presentations, there will be a 5 minutes question and answer session with the presenter. So yeah, so that's all from my side. Do we have any questions? हेलो सर। सॉरी, अभी मेरा नो सर। इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है सर। जी प्लीज मुकेश जी, इंट्रोडक्शन दीजिए ना प्लीज। जी सर मेरा नाम मुकेश है मैं और मैं राजस्थान से हूँ और मेरी उम्र 24 साल है और मैं अभी रेलवे में ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर जम्मू में काम करता हूँ। जी सर, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। So let us begin with the presentation. So who would like to go first? Yeah, sure. So Mr. Sahu wants to go first. So let me share the screen. Okay. Can I share my screen? Is visible? Yes. Yeah, please, like, will you please try sharing the screen? It is visible, na?
No, no. Is Okay. the screen visible to e- 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 everyone? No, sir. Okay. Screen is not visible. Now, now visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible. So, Atomic Habit. Atomic Habit, a book which written by James Clear. It is all about the habit. So, in Mi- this book, Sir, yes, yeah, sir, and sorry to interrupt you. Actually, we are just able to see some uh, bl bl black screen, and we are not able to see any content. okay, okay, wait. Let me check. Okay. Okay, I will speak because I have knowledge about this PPT, so I directly speak. No issue. Or sir, like you can see that you can send me the PPT, and then I can share it from my computer. I am sharing my mail ID with you. Okay, सर सर तो फिर इतना मैं भी है ना सर, तो फिर इतना आपको है ना शेयर शेयर है ना करूंगा फिर श्योर श्योर मेरा श्योर पीपीटी। श्योर श्योर। मैंने, हाँ, ओके सर। मतलब मैंने कॉमन चैट में ही डाल दिया है मेरा मेल यस सर। आईडी। okay, thank you. So, Atomic Habit, it is the book which written by James Clear. This book focus only about habits. So we all know that habit is important in our life. Habit make a man perfect. The habit is a product of our success and our failures. So what is the importance of habit in personal development? So in this book, author have explained small habit make a big difference. So if we change small routine in our life, its impact will be bigger in our life. For example, I can say if I can change myself only 1% every day, after 1 year, I can see I am changed 37%. I'm become my update version after 1 year up to 37%. So it is the beauty of atomic habit that you are changed, but you still not aware that it has remarkable result. So atomic habit, atomic habit emphasize on four cycle. First, clue, craving, response, reward. So we all know when we change our behavior, that means we are doing something unusual. So habit changing work on behavior changing. For example, clue. So when we work on habit, there is a one thing when we get clue means signal, it may be obvious,
Second, craving. So when we get attractive craving, so habit cycle formation will be in up direction. Response, when we get easy response, when we make a habit, there is some internal friction between us and environment. If we make easy friction, then habit is easily made. Fourth, reward. Fourth is very important. When we make some habit and we work on this habit, after working on this habit, we should give reward ourselves. If we do this, means we make it satisfy. Same thing is applicable when we want to remove some bad habit. So we start from first. Clue. Clue means when we making one habit. For example, I want to make habit of running. For running every day, I need some clue. This clue may be running shoes or workout clothes. To making this clue obvious, I keep my running shoes in front of my side or my clothes as near as my bed. Same thing, I can make a visual picture of running shoes and working out clothes. Same thing is applicable in other habit. For example, if I want to make habit of book reading, same thing I can do in this case. I keep book in near my bed. Or second, I can make a visual image of book reading. Second law, make it attractive. So when we make habit, so we have craving. Craving means we have some inner appetites. So when I want to run, making a habit of running, for this thing I need some attraction. So I join a local running group from social media like FV and other group, and I post daily my running post on this group. So I get like, so this thing keep me boost, and it is like a motivation, and it work as a craving which I satisfied. Third law, make it easy. Obviously, when we make any new habit, we have some internal resistance or external resistance. It called friction. If we make this friction very easily, effortless, then there is no any internal or external force which stop us to making this habit. For example, I want to running daily, so I will start from small goal. I will start running daily for 10 minutes only. After 10 minutes, I stop watch and post this uh, photo to my group. And I keep record of this, because unless until we cannot record anything, we cannot change. Fourth law, make it satisfying. The important things is that when we do something good, we have to reward ourselves. There is a different way of to give us reward. For example, I want to run daily. If I run, I make my goals successful, then I give reward myself. I celebrate my this achievement. Same thing when I want to give up junk food. If I
stop junk food. So I have to give reward myself because this reward section is complete our habit cycle. In this book, one thing is very interesting is introduced habit stacking. Anyone know about this? Rohit, you know about this habit stacking? I do not know too much uh, about it. Anyone? Look, so I explain a little bit. Habit stacking means if you have some good habit, like I have a habit of book reading. So I will pairing new habit with this. For example, I read book every day at 8 o'clock evening. So I will club my new habit after book reading or before book reading. And this way of stacking habit is very successful and it's work. Now in this book it is intensify the role of habit also depend on your environment. It is proven. For example, if I want to make habit of running, so I have dedicate space of running gear, motivational environment. For example, if I want to make habit of drinking more water, so I have to keep water bottle near my bed, and when I frequently visit, I keep water there, so I automatically consume more water. And I hide some aerated water, means Pepsi, other things, cold drinks. So automatically my habit is changed, I drink more water. Breaking bad habits. So breaking bad habit is a same to make a new habit, but it is 360 opposite. For example, I have habit of watching TV. So I have one idea which this book recommended. So you simply take out TV from your uh, bedroom to hall. If this is not work, when you have to hide your remote intentionally. And second one, you have to take out your remote cell and hide them. So when you search remote and enter the cell, it become bad feelings, means it become more friction, and eventually your habit of watching TV reduce, and gradually it is vanish. So same, the bad habit become like I explained earlier, the four uh, law of making habit, same is applicable for remove of bad habit. You should start craving, so you have to make it invisible. Second thing, craving, so you make it attractive, unattractive, sorry. Third, response, so make it hard, like I give example of remote control. And fourth, reward, so after doing all these things you make feel unsatisfied, so automatically your old habit will be vanish. It will take some time. Now, conclusion of this book, I recommended each and every person to
read this book. It is very powerful book. It's emphasized on only tiny change in our daily life. Like all things come in small beginning, and seed of every habit is single tiny decision. That is decision repeated and habit of sprout grow stronger. So when we work on small thing, automatically we get good result. Like a SIP. In SIP, we invest small amount. Over a period, we get good handsome amount. Same thing is applicable on habit. So this is from my side. If you have any question, please ask. Thank you. Thank you, Rohit. Thank you, Mr. Sahu, for such a wonderful presentation o- on on a very important topic, which is habit. So now the room is open for any doubts. So if anyone wants to ask something, please feel free to turn on your mic. Yeah. So Viku wants How to to be a ask something. disciplined member, sir? How to be a disciplined disciplined Are you one? hearing me, sir? So you want to say that how to make discipline, right? Yes, sir. Yes, sir. Actually, to discipline is not part of habit, but you have to engage some habit which outcome is discipline. So you can find out such habit like the habit which is responsible for discipline. So it ultimate you get output of discipline. Yes, sir. So Yes, sir. आई होप मैंने आपका आंसर शायद दे पाया हो बट आई थिंक discipline is not any habit, it is outcome of multiple habits. I think so. Mm-hmm. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Also, Mr. Viku wants to ask. Mr. Viku, you please turn on your mic. Hello, sir. Are you hearing me? Yes, 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 loud and clear. Yes. Is I am visible? Hello. Hello, yeah. Yes, sir. My name Uh, is Vikas Kumar, and I am Kanpur, Uttar Pradesh, and uh, I am a 26-year-old man, and I am starting in this group because I am a new here, so I want to give my introduction here because this is very compulsory. So I am asking about some questions that related to stammering. Where the acceptance is. Viku ji, really sorry to interrupt you. आपको अगर जो भी मतलब Okay. स्टैमरिंग पे सवाल सवाल होंगे ना, so then you can ask me on this WhatsApp number. So I am sharing you my WhatsApp number. Yes, sir. So so then uh, Okay. yeah. So yeah. So thank you, Vikuji. Thank you for your time. And till that time, you can enjoy all these wonderful presentations. Also, Mr. Sahu, I have one small question for you. Uh, so like according to the novel,
So what does it say that whenever we start whenever we are on a journey to practice a habit, but then there are some challenges where we feel demotivated. So then what does the novel say to tackle such challenges? Okay. Rohit ji, as I understood in this novel, when we get some difficulty to establish new habit, so first we start from small one, and we if we still we not get in success in this habit, then we continuously work on this habit. Eventually, we will succeed to make a habit. But we have to keep patience and work continuously on habit, because habit forming is not just 21 दिन का काम है. It's not work. When you work on your behaviors, we observe your behavior daily base. You have to notice your behavior. If you found that my behavior is starting to change, that way you find that you making a new habit. So it is very tough. But when you really want to change your habit, so you have to work on ground, and you start from small things. Rohit, I think you get your answer. Yes, yes, yes. Thank you, Thank Rohit. you very much. Mr. Sanjay wants to ask something. हाँ, पहले तो मैं अनिल जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे से दिया। और Thank you. मेरा सवाल अनिल जी ये है, क्या इस बुक में मेंटल हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में भी अगर कुछ हो तो आप शेयर कीजिए। क्योंकि फिजिकल हैबिट के बारे में बात बहुत होती है, लेकिन मेंटल हैबिट के बारे में बात थोड़ा कम होती है। हाँ, थैंक यू संजय जी, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है. सो मेंटल हैबिट मेंटल हैबिट ओवर थिंकिंग, और जो चीज़ हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचना, तो भी एक हैबिट है. जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उसको रिग्रेट करते हैं, तो इट इज़ पार्ट ऑफ हैबिट. अगर हम वो चीज़ स्टॉप कैसे कर सकते हैं, तो स्टॉप करने के लिए हमें योगा, प्राणायाम, और स्पेशली आई रिकमेंडेड फॉर दिस थिंग is vipassana, because I have attended this vipassana. It work on your thought. आप अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली विपासना का प्रैक्टिस करते हो. तो आप एक टाइम अपना अगर थॉट को कंट्रोल कर सकते हो, थॉट को मिनिमाइज कर सकते हो, तो आई थिंक आपका जो मेंटल का डिस्टर्बेंस है वो मिनिमाइज कर सकते हैं. आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा संजय जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. Also, Vikuji wants to ask something. वीकू Hello. जी, आपको कोई सवाल है? जी जी. Yes, sir. As I am asking something from sir, कि जैसे कि हम बात जब करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और एम्पलीफाई भी करते हैं, बट जब हमें किसी स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, तब सर उस टाइम हम पहले की जो प्रैक्टिस की हुई होती है या प्रैक्टिस अभी तक की हुई है, बट सर उधर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. उधर जाके एक स्टेज फियर या हमारा जो जो हमारा अभी तक का जो भी परफॉर्मेंस रहा है लाइफ का, पास्ट का,
वो हमारे सामने आ जाता है कि हम सर जाके एज क्लियरली स्पीक नहीं कर सकते। सर उस हाय टाइप की जो हाय मेंटेलिटी है एवरीवन। सर, उसको हेलो। कैसे दूर करें? विकास जी, आई एम मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया है और मैं टोस्ट मास्टर में 4 साल से जा रहा हूँ। पहले मैं स्टेज पे आने से मेरे हाथ पैर ओके। में वाइब्रेशन होते थे, मेरी आवाज नहीं निकलती थी। बट आफ्टर 3 year continuously I went there, I chase my fear, I defeat my fear। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से ही होगी। टीसा में जो दी है टेक्निक वो यूज करनी है, वो सब हैबिट का पार्ट ही है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और टेक्निक में बोलने का आदत डाल रहे हो, दैट दिस थिंग विल बी मैनेज। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। So thank you, thank you, Mr. Sahu. So now we will be moving on to the next presenter. So who wants to pre pre pre- present next? Yeah. So Mr. SOWCAR Kareem Jaffar will be presenting next. So just give me a minute. I am uploading your presentation No, on. you can make me a co-host. You can make me co-host. हाय एवरीवन। Just give me one more minute. I am just हेलो। trying to upload the presentation. हेलो। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। हाँ सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर क्या मैं बोलूँ थोड़ा कुछ? लखन जी, जी जी, प्लीज प्लीज, हाँ जी, हाँ, हाँ जी लखन जी, हाँ आप कुछ सर बोलना तो चाहते हाँ सर। सर मैं सर सबसे पहले सर अपना मैं सर इंट्रोडक्शन सर देता हूँ सर। जी? ओके सर। सर हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ, आपकी हाँ। आवाज सॉरी सुनाई सर, दे रही है। सॉरी सर, ओके सर, मैं सॉरी बताऊँ सर, सर। पढ़ता है ना सर, पढ़ता नहीं ये है ना सर, तो फिर तो ना मेरा मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है जो आपने शेयर सर शेयर किया है। सर सॉरी। हेलो। हेलो। ओ, ओके 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 ओके, आई जस्ट गॉट अ लिटिल कंफ्यूज, सॉरी। क्या क्या सर? सर क्या अब मैं बोलूँ सर अब? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। सर मेरा नाम लखन चड़ार है और मैं मध्य प्रदेश के एक सागर जिले से हूँ। और मेरी मेरी एज अभी 22 साल है। और मैंने अपने एजुकेशन में एजुकेशन में BA आर्ट से कंप्लीट की है। और मैं अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे स्टेमरिंग की प्रॉब्लम मुझे बचपन से है। और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे 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 हम किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं, जैसे कोई नए पर्सन के सामने बोले जाते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि आप वो मत बोलो, रहने दो, आपसे होगा नहीं सर। तो सर इस थॉट को कैसे सर कंट्रोल करें? लखन जी, मैं आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बट नाउ वी आर इन अ
presentation event. तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर इस ग्रुप चैट में डाल रहा हूँ. सो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड फिर हम ओके इस सर. पे काफी डिटेल वे में बात करेंगे. थैंक यू. ओके सर, तो सर डाल दीजिए सर आप अपना नंबर सर. जी. Yeah, so let us begin with the presentations. Yeah. Is this scene visible? Yeah, yes. Okay, sure. Thank you. Answer. Have you wondered why some changes in your life are easy to achieve and are more lasting while we keep struggling with other changes in our life, be it on personal or organizational level? Good evening, everyone. Today, we will explore and understand the answer to the previous question, and also we will learn today the secret of creating lasting changes using the Robert Dilts neurological level of transformative process. In this model, we have in this model we have 6 level of hierarchy. So starting from the bottom, first is the environment. Here, it tells us about where do we need to make a change. Change here means to make a change in a habit for our personal or professional growth. So first is the environment. It tells us about where do we need to make a change. Second is the behavior. So it tells us about what do we need to make a change. So it answers the question what. Third is the skills and capabilities. So it tells us about how do we need to make a change. So it answers the question how. Fourth is the conviction, which is also known as beliefs or values. So it answers the question why. So why do I need to make a change? Why do I need to make a change in a habit? Fifth is the identity. Identity comprises of behavior, skills, and conviction. So it is it it answers the question who am I? Yeah, it is the identity. So last is the on the topmost is the mission or goal. It's the most important because it answers the question for what and for whom do we need to make a change. So if we have a clear mission or goal, then it will be more likely that we will be able to make a change in our life. So let me go through this model by using the personal example of me improving my public speaking skills as a stammerer. So before, as a stammerer, starting from the top mission, my mission in terms of improvement public speaking skill before was to avoid any speaking activities, especially the public speaking, so that I won't get embarrassed or judged. So that was my mission before. Then before I used to identify myself as a stammerer, and
and as a person who won't be able to speak fluently. And on top of that, anxiety even made this identity even stronger. Then comes the conviction and belief. Before, I used to believe that I need to hide the stammering from the people so that people won't judge me. And also, I used to believe that I, I am inadequate. And on top of this, anxiety and the avoidance behavior even made my belief even more firm. Then comes the skills and capabilities in terms of public speaking. Before, as my belief was so firm, I was not even bothered to improve my public speaking skill because I had this strong belief that I won't be uh, able to improve my public speaking and communication skills. So, then comes the behavior. Then comes the behavior. Before, I used to cope up with my stammering by avoidance behavior. I try to run away from the problem. I try to run away whenever I get the opportunity of speaking. So, and also during any public speaking, I used to have lots of anxiety, and also I used to have increased heart rate, and my jaw muscle was stiff, and I was not able to get the words out of my mouth, and uh, and my body language was poor. Like I used to have monotonous tone, and there was no posture, fixed fixed posture, and there was no uh, uh, eye contact. So it was my behavior during speaking was very uncomfortable and unnatural before. Then comes the environment. Before, I used to uh, avoid any place where there is high chances of speaking. Like for example, I used to uh, avoid sitting in the first and second row of the class. And also, I didn't participate in any speech competition or debate competition in schools. So now let us understand how this model has helped me as a tool to improve my public speaking skills and also the communication skill as a stammerer. So let us go through the from the top. First comes the mission. So now my mission is to become a great public speaker so that my voice can have a powerful and meaningful impact on others people's lives. Then comes the identity. Now I identify myself as a strong, confident man. Then comes the beliefs and values. Now I have the belief that it's okay to stammer, and my voice is valuable and deserve to be heard. And I also have the belief that I will overcome this, and I will never ever let this stop me. Then comes the capabilities and skills. So now I am capable of improving myself, improving my public speaking skill, and also speaking and expressing myself freely, and in this process also inspiring others. Then comes the behavior. Now I try to implement, which is practicing speaking rather than avoidance, which I used to do previously. And now I try to face my fear each day, and I try to improve myself each day. And now I also focus more on my improving my body language also. And now still I have the anxiety, and I manage it with
first I acknowledge my anxiety, and then I manage it with meditation, deep breathing, and slow speaking. Then comes at the last comes the environment. Now I try to use each and every opportunity of speaking, and I prepare my speech and I give my best. And even if I did any mistake, I work on it, and I I am also been I have also been the part of Toastmaster Club, where every week I give the speeches. Then after the feedback, I try to like see the recorded version of my speech, and I try to analyze and work on my mistake. So, uh, so I know that I am improving myself each day. So, so how to conclude? You can also use this model as a tool to improve your public speaking skills and communication skill as a stammerer, so that you can also make your change in your life much easier, and also you can see which level you have to work on so that the change becomes much easier. Thank you. Thank you, thank you, Mr. Saukar Kareem Jaffar. That was indeed a wonderful presentation. Thank you. And yeah, and you are actually a pretty good public speaker. Thank you. Uh, Any questions? yeah. So, anyone? Any? Do you want to ask anything? हाँ सर, मैं पूछना चाहूँ जी. Yeah, सर, sure. पहले तो मैं शोकार जी को बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था और उनने ब्यूटीफुल तरीके से उसको स्टैमरिंग से लिंक किया। मेरा क्वेश्चन ये था कि बिलीफ सिस्टम जो डीपर लेवल पे होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि कुछ बिलीफ सिस्टम सरफेस लेवल पे तो चलो मान लेते हैं कि चेंज हो जाएंगे, डीपर लेवल पे हम जानते हैं कि वो क्या है। जैसे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मैं शाय ज्यादा हूँ, या इंट्रोवर्ट हूँ। मुझको भी ये था डाउट, मैंने भी ये सर से पूछा था ये डाउट, सेम डाउट। हम है ना, बिलीफ सिस्टम को कैसे हम चेंज करें, ये कैसा है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, सो वी हैव टू work on it daily, so that we should practice it daily, so that the belief is very difficult to change, so it will take a time, so we have to work on the content of the speech and the delivery of the speech, rather than thinking about this past, about this stammering. So we should focus on the content and the delivery, like how can I improve my body language, like how can I vary my tone of the voice, how can I use my hand gesture, how can I make the eye contact to the audience, how can I make the audience comfortable. So we should work on this area rather than thinking about what the people will think of me. So in the long term, our belief system will change slowly. So it's a long process. Yes. Thank you, SOWCAR ji. Thank you very much. Do we have any more doubts regarding the presentation? Yeah, so I guess that's all. And thank you very much, Mr. Saukar Kareem Jaffar. And that was really a pretty good
presentation, and yeah, and please correct me if I am wrong. So the conclusion of the presentation is that you are what you believe you are, right? Yeah. Okay, okay, It's great, like great. the mission is very, very important. Then comes the belief, like what I believe about myself. So it's like mission is top. Then comes the all the below. Okay, and with the belief system, you also Belief and need to changes. practice, Yeah. practice a lot, right? Practice is also, yeah. Behavior is practice. Like what can we do? Like practice. So how to improve our communication skills and public speaking skills. Wow. Thank you for teaching us such a important thing. Thank you so much. It's my pleasure. So the third presenter is Mr. Naman. So I hope he is Yes, ready sir. ready to give his presentation. Great. So just give me a minute. I am sharing your presentation. Okay, sir. Okay, fine. Fine with that. Also, let me know if you are able to see my screen. Okay, sir. Let me Yes, sir. know. Yes. Yes, sir. So now, okay. So now my name is Naman Pargania, and I am here to present a presentation on intelligent control of ring distribution of a burden in a blast furnace. क्योंकि तो फिर तो ये तो ना फिर तो मेरा ना इंटर्नशिप का ही फिर ये ना मेरा ना प्रोजेक्ट था क्योंकि तो फिर ये तो ना फिर तो मेरा ना थर्ड सेमेस्टर का था ये थर्ड थर्ड सेमेस्टर का फिर ये ना प्रोजेक्ट था सर नेक्स्ट स्लाइड ओके ओके सो फिर here are some contents about sale about BSP or overview of blast furnace and project description and conclusions. Sir, next slide. Okay. Okay. तो फिर ना सेल क्या है? So है ना सेल 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 is a steel authority of India लिमिटेड है जिसका है जो कि तो फिर ना वन ऑफ द महारत्न में आता है ऑफ द टोटल नाइन महारत्न में वही है कि तो फिर ना सेल का काम सेल का काम है ना फिर इतना है कि जो तो है ना भी तो फिर इतना चार से पांच है ना प्लांट्स को स्टेट लेवल प्लांट्स को तो फिर ना वो इतना गवर्न करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील का और तो ना वही है कि फिर इतना सेल है ना तो फिर 24th वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर्स में आता है सर नेक्स्ट स्लाइड ओके सो सोना भिलाई सोना भिलाई स्टील प्लांट जहां से तो फिर तो ना मैं तो ना खुद ही हूँ मैं भिलाई भिलाई स्टील प्लांट क्योंकि तो फिर तो ना ये तो ना वन ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट्स है ना में तो फिर तो ना आता है जिसे तो फिर तो ना रशियन और तो ना इंडियन ने फिर तो ना एक साथी फिर तो ना बनाया था इन दी 1959 में और तो बीएसपी पीएसपी है ना तो फिर तो ना वन ऑफ द लार्जेस्ट है ना मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्टील है थ्रू आउट दी ऑल दी सेल प्लांट्स है ना प्लांट्स है ना में और तो है ना वही है कि फिर तो ना सेल का सॉरी बीएसपी का है ना तो फिर तो ना आधे से ज्यादा है ना स्टील है ना तो फिर तो ना रेलवेज के रेल और तो है ना फिर तो ना बाकी के सारे कंपोनेंट्स बनाने में यूज होते हैं ओके
ओके तो नेक्स्ट। सो अब सो सो अब है ना, तो फिर है ना हम लोग है ना बात करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है। तो है ना वही है कि तो फिर ना ब्लास्ट फर्नेस है ना, तो फिर एक है ना इवोकुलेटेड चैम्बर चैम्बर है ना फिर इतना होता होता है सबसे में कि है ना, तो फिर इतना हम लोग है ना, तो फिर ना हमेशा ही तो फिर ना हम लोग है ना इसमें हीट हीट है ना करते हैं और तो है ना वही है कि है ना हम लोग है ना फॉर द फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन स्टील के लिए, तो फिर ना हम लोग को है ना मेजरली दो दो कंपोनेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लाइक कोल कोल एंड आयरन ओर की। तो ना तो फिर सबसे मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम में तो फिर ना हम लोग को ये दोनों दोनों कंपोनेंट्स की जरूरत जरूरत होती होती है। और तो ना फिर ना इन है ना दोनों के बीच है ना, तो नहीं है ना फिर ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन द चैम्बर ऑफ द ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस में। और तो है ना, तो फिर ना हम लोग को है ना फिर ना अगर तो है ना स्टील की भी है ना, तो फिर ना इम्प्योरिटी को है ना हटाने के लिए तो फिर तो हम लोग है ना लाइम स्टोन और तो है ना मैग्नेटाइट का यूज यूज करते हैं। तो फिर तो है ना उसके बाद है ना, तो फिर ना हम लोग है ना स्टील को ना फिर ना फर्दर प्रोसेस के लिए तो फिर ना और भी चैम्बर्स में भेजते हैं। ओके सो नेक्स्ट लेट्स सो अब ये है मेरा ये है मेरा प्रोजेक्ट कैसे की लाइक है इंटेलिजेंट कंट्रोल ऑफ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन इन ब्लास्ट फर्नेस। सो 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 है ना वही है कि तो फिर सभी के ना दिमाग में तो फिर इतना आई थिंक सो क्वेश्चन है ना फिर इतना आएगा ही। तो फिर इतना ये ना क्या चीज है ये। तो वही है वही है कि तो फिर इतना ये तो है ना फिर एक है ना फिर ना इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है जो कि है ना, तो मतलब कि सारे के सारे है ना रॉ मटेरियल्स को इवनली और तो है ना सॉरी एक्यूरेटली है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर द चैम्बर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट ब्लास्ट फर्नेस में, ताकि है ना हम लोग को फिर बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील मिल सके। ओके सर नेक्स्ट। ओके सर, वैसे नहीं यही सब था जो कि तो फिर तो मैंने फिर अभी एक्सप्लेन किया था। ओके ओके सर नेक्स्ट। ओके सो सो है ना मेरे प्रोजेक्ट में यूज यूज होने वाले अब है ना फिर तो ना यहाँ से ना फिर तो ना कंपोनेंट्स के नाम है जैसे कि लाइक सबसे पहला आता है ना फिर इस सॉरी इन इन कोडर आता है। तो फिर इसका काम है ना बस तो ना वही है कि फिर तो ना ये तो ना फिजिकल फिजिकल मोशंस को है ना, हाँ सॉरी फिजिकल मोशंस को है ना, तो फिर तो ये तो है ना फिर तो ना हमारा है ना प्रोग्रामिंग और सो है ना इलेक्ट्रॉनिक है ना लैंग्वेज है ना मेन ना, तो फिर ना ये तो ना कन्वर्ट करता है। और तो फिर वही है कि ना दो दो टाइप्स के फिर तो ना हम लोग के पास में ना इनकोडर होते हैं कैसे कि लाइक ना रोटेटरी एंड लीनियर। मतलब है कि है ना सॉरी सॉरी रोटेटरी है ना, तो फिर तो ना वो तो है ना अ, कोई तो कोई तो है ना भी है ना कैसे कि लाइक है ना सॉरी रोटेशन है ना फिर हो रहे हैं। तो फिर तो ना वो सबको तो फिर तो ना वो है ना साइंस है ना करता है। फिर तो ना कैसे कि लाइक है ना लीनियर है ना, तो मात्र मात्र न कैसे कि लाइक है ना कोई सा भी है ना मोमेंट है ना, तो फिर तो मात्र है ना कैसे कि लाइक है ना, तो फिर ना हम लोग के पास है ना एक एग्जांपल है लाइक लेजर हो गया तो फिर इतना वैसे वैसे को तो फिर तो वो है ना सेंस सेंस करने का काम करता है। ओके सर नेक्स्ट।
अब आता है हम लोग के पास आता है नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट आता है रिले। तो तो है ना, ओके ओके ओके, सो फिर तने इस है ना कंपोनेंट का काम है ना वही है कि फिर तना ती, 3 से 4 और तो ना उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा है ना, तो फिर तो ना वो तो ना सर्किट्स को सर्किट को जो है ना जोड़ता है और तो फिर तो वही है कि फिर तो ना वो तो है ना, तो फिर सारे है ना सर्किट्स के है ना बीच है ना मेन, फिर तो वो है ना फिर एक है ना, तो फिर स्विच की तरह है ना काम करता है। ओके, तो फिर तो ना नेक्स्ट आते हैं स्किप आते हैं, तो फिर तो ना इस स्किप का ना काम ही है ना वही है कि बस है ना, तो फिर तो वो है ना रॉ मटेरियल्स को ना, तो फिर तो वो है ना चैम्बर है ना में, तो बस है ना उस उसका ना डिपॉजिट करने का ही बस काम है। ओके सर, नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं पीएलसी आते हैं, तो फिर इतना पीएलसी तो फिर इतना हम लोग ना कह सकते हैं, तो फिर इतना है कि तो फिर इतना ये है ना, तो फिर मेरे सर्किट का मतलब है कि ना, सॉरी सॉरी ना, मतलब कि ना मेरे है ना प्रोजेक्ट का फिर इतना ये है ना, मतलब अच्छा ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो है ना, तो फिर इतना पीएलसी है ना, तो फिर तो सारे के सारे तो फिर तो मोमेंट्स को सारे के सारे ना फिर इतना डाटा को तो फिर इतना सारे के सारे फिर इतना यहीं से ही कंट्रोल होंगे। कंट्रोल कंट्रोल है ना फिर इतना होंगे और तो जो भी जो सॉरी जो तो है ना भी तो फिर इतने इंजीनियर है ना, तो फिर इतने ही है ना पीएलसी में है ना अपना प्रोग्रामिंग है ना करेगा ना, तो फिर उसी के थ्रू ही उसी के थ्रू ही तो फिर इतना हमें हमें है ना, तो फिर इतना हमारा हमारा है ना रिजल्ट है ना मिलेगा। तो तो है ना वही है कि तो फिर इतना पीएलसी है ना, तो फिर सारे के सारे है ना सिस्टेमेटिक वे ऑफ कंडक्शन के लिए, तो फिर तो ये ना काफी ज्यादा ही फिर तो नहीं यूजफुल होता है। ओके सर, नेक्स्ट। अब है ना भाई, ये तो चूट है, मतलब है कि ना चूट का काम ही है ना वही है कि तो फिर तो ना ये तो है ना फिर तो ना रॉ मटेरियल्स को है ना, मतलब कि प्रॉपर प्रॉपर और तो ना इवनली है ना डिस्ट्रीब्यूट करने का ही है ना मात्र मात्र इसका काम काम है ना होता है, जो कि तो है ना बस ये है ना, तो फिर मात्र ना बस ने एक ना स्ट्रक्चर है जो कि अ, जो कि है ना फिर एक ना गोल है ना, फिर तो ना भाग है ना, तो फिर तो ना ये तो ना घूमता है, और तो फिर तो ना इसी के साथ ही साथ है ना, तो सारे के सारे है ना रॉ मटेरियल्स भी है ना डिस्ट्रीब्यूट है ना होते जाते हैं, एंड तो फिर ना होते जाते हैं। ओके सर, नेक्स्ट। अब है ना फिर तो वही है कि है ना सिग्निफिकेंस ऑफ द रोटेशन एंड द टिल्टिंग सिस्टम, मतलब कि फिर तो ना वही है कि फिर तो ना हमेशा ही किसी भी चैम्बर है ना मेहनत फिर तो ना दो प्रकार मतलब है ना दो ठोक है ना, तो फिर तो ना हम लोग है ना हुपर्स हुपर्स है ना, तो फिर इतना र- 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 रखते हैं, तो फिर इतना जहां पर है ना फिर इतना हमेशा ही और और रॉ है ना मटेरियल है ना हमेशा से ही है ना मौजूद है ना होता है, ताकि है ना तो फिर इतना ब्लास्ट फर्नेस का कभी भी हो प्रोसेस है ना रुके ना। अगर तो फिर इतना वही है कि है ना ब्लास्ट है ना फर्नेस है ना कभी भी हो बंद है ना होता नहीं है कभी भी हो, ओनली मतलब कि है ना फिर तो वो है ना 24 है ना आवर्स है ना, तो बस है ना वो है ना चलता ही रहता है, एंड है ना चलता ही रहता है, कभी भी हो तो फिर तो ब्लास्ट फर्नेस कभी बंद नहीं होता। ओके सर, नेक्स्ट। ओके ओके, सो इतना
केस वही है कि फिर इतना ये तो ना मतलब कि ना पीएलसी है क्या? मतलब कि फिर इतना यहीं से है ना, तो फिर इतना हम लोग को है ना पूरा ना मतलब कि ना हर चीज के है ना बारे में ना फिर इतना पता है ना, चलता है ना फिर इतना है कि तो फिर इतना कितने प्रकार के, तो फिर इतना रॉ रॉ है ना मटेरियल्स है ना फिर इतना हम लोग है ना यूज है ना कर रहे हैं ना, तो फिर इतना रहे तो है फिर इतना चैम्बर का, तो फिर इतना प्रेशर प्रेशर है ना फिर कौन सा है, फिर इतना कितना कितना है, तो फिर क्या क्या है, तो फिर इतना यहाँ से फिर ना हम लोग को सारी सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है कि सर नेक्स्ट। ओके सो फिर ना कंक्लूजन, तो कंक्लूजन तो फिर ना वही है कि फिर ना ब्लास्ट फर्नेस क्योंकि है ना ब्लास्ट फर्नेस से ही तो फिर ना हम लोग को ना स्टील स्टील फिर तो ना मिलता, तो फिर तो ना है और तो फिर तो वही है कि फिर तो ना स्टील की है ना क्वालिटी का ना कहीं है ना, तो फिर तो ना सबसे सबसे ना ज्यादा फिर तो इम्पोर्टेंट है ना, तो फिर मेरा मेरा ना प्रोजेक्ट शायद शायद ना तक के कहीं ना कहीं फिर तो वो था ना होल्ड है ना करता, तो फिर तो ना है तभी तभी है ना इन दी डेली बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रीज में है ना, तो फिर तो ना ये है ना सिस्टम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर। ओके सो थैंक यू सर। सो Wonderful, Mr. Naman. थैंक यू सर। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नमन, मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मैं भी भिलई स्टील प्लांट में एज अ इंटर्न था। मैं शायद अच्छा दो ओके तीन सर। महीने के लिए था मैं, एंड आई वाज ओके इन दी यस सर। कोक ओवन गैस का जो जो डिपार्टमेंट था ना, कोक यस ओवन सर। गैस। यस सर। यस सर। तो यस सर। फिर मैं जितना मैरिड भी वाइफ टाइम में। था भिलई स्टील प्लांट से बहुत प्यार मिला एंड खासकर यस जो सर। भिलई स्टील प्लांट के कैंटीन में जो कोई तो भी स्वीट था, डोसा। यस नहीं नहीं, सर। स्वीट यस सर स्वीट था यहाँ। जो जो ओके स्वीट जो ओके। जो हमारे पंडित नेहरू को काफी पसंद था वो स्वीट। तो ओके लाइक ओके मतलब सर। उ, 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 उन्होंने ही वो स्वीट भिलाई स्टील प्लांट में लाया था। तो आपके प्रेजेंटेशन से मतलब सब पूरा याद आ रहा था सो थैंक यू फॉर यस सर। ब्रिंगिंग अप सच अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। Yeah, so थैंक coming यू back to सर। any doubts for Mr. Naman's presentation, anyone? Okay, so सिंपल ही like सिंपल ही था सर कहीं ना कहीं, फिर तो मेरा प्रेजेंटेशन सभी लोग को फिर समझना भी फिर आ ही गया होगा। इट्स जी इट्स एंड रॉ का एंड राइट एंड काफी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक भी था। तो इसके लिए मतलब यस शायद सर। डाउट्स नहीं होगा ओके, बट नो डाउट, बट आप जब यस आपके सर। कॉलेज में ये इंजीनियर्स प्रेजेंटेशन दोगे तो तब सबको समझेगा। ओके सो गाइस, दैट हो चुका है वाज सर। हो चुका है okay. ये Great, ना मेरा great, प्रेजेंटेशन हो चुका है। यस सर। great, थैंक यू great. सर। Okay, so this was the end of today's presentations, and I will highly encourage each one of you to kindly give your feedback in the Telegram group. भले वो कितना भी भले आपको इस presentation event में कोई भी खामियां लगती हो, बेझिझक बताइए। कोई कोई अच्छी बात भी लगती हो वो भी टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, so that the TISA so that the TISA volunteers can also improve in such wonderful events. And so that's all. And do share your valuable feedback with us, because with you because at the end we all have to learn and grow together. So thank you. यस सर। Sure. थैंक यू सर। Thank you. Bye, and have a Thank wonderful you, sir. सेम टू सर। यू टू। wonderful night, uh, everyone. Goodbye. थैंक यू सर। Thank you so much. बाय।